Hello, dear students. How are you to all? I hope all of you feel good. Students, today I am going to teach you chapter number 2 of our social science book. The name of the chapter 2 is The Land of Snow. Let us start our chapter, students. The Land of Snow. In this chapter, we will read about the North Pole, Arctic Ocean, Antarctic Ocean, South Pole, Greenland, like that. Let us start our chapter, students. The region around the poles are called polar region. That means the region, the area around the poles are called polar region. Around the North Pole is the Arctic Ocean. That means in the North Pole is the Arctic Ocean is located here. This ocean is surrounded by Asia, Europe and North America. Which ocean? Arctic Ocean. Arctic Ocean is surrounded by Asia, Europe and North America. Around the South Pole is the continent of Antarctica. Around the South Pole is the continent of Antarctica. Students, you know that there are 7 continents in the world and 5 oceans in the world. The region around the poles are called polar region. That means you know that we have 2 poles, North Pole and South Pole. South Pole and North Pole का region, आसपास का area, the area around the poles के आसपास का area, that area is known as polar region. Around the North Pole is the Arctic Ocean. North Pole के पास Arctic Ocean है. This ocean is surrounded by Asia, Europe and North America. Which ocean? Arctic Ocean. Arctic Ocean is surrounded by Asia, Europe and North America. आर्टिक ओशन के पास एशिया है, यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है. अराउंड द साउथ पोल इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका और साउथ पोल के पास कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रीनलैंड. Greenland is the world's largest island situated near the North Pole. Greenland is the world's largest island in the world. That means Greenland is the largest island in the world. Which is the largest island in the world? Greenland. And Greenland is situated near the North Pole. जो Greenland है, it is situated near the North Pole. This country remains under snow and ice throughout the year. This country, which country? Greenland. Greenland remains under snow and ice throughout the year. The original inhabitant of Greenlands are the Inuits. The original inhabitant of Greenlands are the Inuits. So students, which is the largest island in the world? Greenland. Greenland is the largest island in the world. संसार का सबसे बड़ा island, that is our Greenland. And Greenland is situated near the North Pole. Greenland कहाँ है? North Pole के पास. This country remains under snow and ice throughout the year. Greenland country remains under snow and ice throughout the year. That means Greenland पूरे साल Greenland पे ice होती है, बर्फ गिरती रहती है. The original inhabitants of Greenland are the Inuits. Original inhabitants means वहाँ के मूल निवासी. Greenland. The people of Greenland are the Inuits. The people of Greenland are called Inuits. That means the original inhabitant of Greenland. Greenland के मूल निवासियों को Inuits कहा जाता है. Now let us move बेटा. Eric the Red, the famous explorer, spent 3 years exploring this island. He named it Greenland. Eric the Red, he is a famous explorer. Eric the Great is the name of famous explorer. एक खोजकर्ता का नाम है. He spent 3 years exploring this island. वो 3 साल इस island पे रुका. And then after he named it Greenland. और उसने बाद में इस island का नाम Greenland रख दिया. Eric the Red,
He is a famous explorer. Eric the Red spent 3 years exploring this island. After that, he named it Greenland. Now let us move, beta. They call their country Kalalit Nunat. They call their country Eric the Red. Eric the Red called their country Kalalit Nunat, which means the land of people. और यहाँ के लोग, ग्रीनलैंड के लोग, अपनी कंट्री को कालालिट नूनट कहकर पुकारते थे, विच मीन्स लैंड ऑफ पीपल, मतलब लोगों की जमीन, लोगों की भूमि. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लोकेशन. Greenland is located towards the northeast of North America. That means Greenland is located in the North America. More than 2/3 of the island is located north of the Arctic Circle. More than 2/3 of the island is located north of the Arctic Circle. The Baffin Bay and the Davis Strait separates the Greenland. Baffin Bay and Davis Strait, they separate the Greenland. They call their country Kalalit Nunat. Who call their country? The people of Greenland. The people of Greenland they call Kalalit Nunat. जो लोग ग्रीनलैंड के रहने वाले हैं वो अपनी कंट्री को कालालिट न्यूनट कहते थे, विच मीन्स लैंड ऑफ पीपल, दैट मीन्स जमीन लोगों की. Then let us talk about the location of the Greenland. Location. Greenland is located towards the northeast of North America. Greenland located है north east में North America में, north east direction में North America में. More than 2/3 of the island is located north of the Arctic Circle. More than 2/3 of the island, 2/3 island, it is located north of the Arctic Circle. नॉर्थ में आर्टिक सर्कल की तरफ लोकेट है. द बेफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट, द बेफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट बोथ सेपरेट ग्रीनलैंड. बेफिन बे और डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड को अलग करते हैं. नाउ लेट अस मूव बेटा. हियर वन फैक्ट वाइज इज दिस. द यूएस सबमरीन USS Nautilus sailed under the Arctic sheet and reached the North Pole in 1958. This proved that the huge ice sheet in the Arctic is actually floating on water. That means समुद्र के नीचे the US submarine पनडुब्बी submarine USS Nautilus, उसका नाम, that name, submarine name is USS Nautilus. It sailed अंडर द आर्टिक आइस शीट, और ये तैर कर कहाँ से, आर्टिक शीट के अंदर से, आर्टिक ओशन के ऊपर जो आइस शीट है उसके नीचे से तैर कर निकल गई. कौन? सबमरीन USS नॉटिलस. एंड रीच द नॉर्थ पोल इन 1958. आर्टिक ओशन की आइस शीट के नीचे से तैर कर एंड इट रीच्ड इन द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में निकल गई 1958 में. This proved that the huge ice sheet in the Arctic is actually floating on water. इससे ये प्रूफ हुआ है कि आर्टिक ओशन के ऊपर एक बहुत मोटी आइस शीट फ्लोट हो रही है, तैर रही है. Now let us move बेटा. From the northern island of Canada, Greenland is a part of Denmark. From the northern island of Canada, कनाडा के नॉर्थन पार्ट में जो आइलैंड है, it is a part of Denmark. Greenland is a part of Denmark. Greenland जो है वो डेनमार्क का ही पार्ट है. Now let us talk about land of Greenland. Greenland covers an area of about 21.5 lakh square kilometer. The island looks wide as about 80% of the land is permanently under snow and ice. The average thickness of the ice sheet is about 1,500 meter. The lower layer of this ice sheet may have existed since the last ice age. That means Greenland is a part of Denmark. Greenland covers an area of about 21.5 lakh square kilometer. ग्रीनलैंड फैला हुआ है, ग्रीनलैंड आइलैंड फैला हुआ है 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में.
दिस आइलैंड लुक्स वाइट एज अबाउट 80% ऑफ द लैंड। इस आइलैंड पे 80% बर्फ है, पूरा वाइट दिखता है, दैट इज वाई इट लुक लाइक अ वाइट। एंड इट इज परमानेंटली अंडर स्नो एंड आइस। परमानेंट यहाँ पे स्नो रहती है, आइस रहती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस शीट इज अबाउट, यहाँ पे जो बर्फ फैली हुई है उसकी एवरेज थिकनेस, कितनी मोटाई है, कितनी थिकनेस है, दैट इज 1500 मीटर। दैट मीन्स 1500 मीटर आइस शीट की एवरेज आइस शीट है। The lower layers of the ice sheet may have existed since the last ice age. The lower layer of the ice sheet may have existed since the last ice age. जो ice रहती है इनकी भी age रहती है. Now let us move. The average thickness of the ice sheet is about 1500 meter. जो ice sheet है इसकी average thickness it is 1500 meter. The lower layer of this ice sheet may have existed since the last ice age. जो सबसे नीचे की परत है ice sheet वो भी exist हो जाती है last ice ages में. Huge pieces of ice often broken away from the ice sheet and slide down into the sea. These are called iceberg. These blocks of ice look like huge frozen. Huge pieces of ice means बड़े बड़े पीस आइस के often break away from the ice sheet, जो बहुत मोटी आइस शीट है उससे टूटकर बिखर गए, and slide down into the sea, और सी के अंदर, समुद्र के अंदर स्लाइड डाउन हो गए. These are called icebergs. ये जो बड़े बड़े आइस की शीट टूटकर बिखर जाती है that is known as iceberg. These blocks of ice look like huge frozen. और ये जब दूर से देखेंगे तो हमें ये huge frozen एक it look like a mountain की तरह दिखता है. So students, the average thickness of ice sheet is about 1500 meter. The lower layer of this ice sheet may have existed since the last ice age. Huge pieces of ice often break away from the ice sheets and slide down into the sea. These are called iceberg. These blocks of ice look like a huge frozen. That means it look like a mountain. So students, here one picture is this. Huskies are used to pull sledge. Mountains floating in the sea. These are often not visible due to thick forest. That means so many ice sheets or icebergs are floating in the sea. These are often not visible to thick fog. ये जो आइसबर्ग्स हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं आइसबर्ग्स के, ये सब हमें विजिबल नहीं होते फॉग में, कोहरे में दिखाई नहीं देते. आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर शिप्स. जो आइसबर्ग्स है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर शिप्स. शिप जो आ रहा है ओशन में या सी में उसके लिए इट इज़ वेरी डेंजरस. दैट सेल थ्रू दिस रीजन, वो अगर उस रीजन से निकल रहे हैं और आइसबर्ग है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स. Now let us talk about climate. Greenland has an Arctic type of climate. जो Greenland है it has an Arctic type of climate. The winters are long and cold. That means the winter ठंड का मौसम long होता है and cold. The sun does not rise for several weeks. सन ही नहीं निकलता. It does not rise for several weeks. बहुत ही हफ्तों तक नहीं निकलता. The temperatures drops below the freezing point. टेम्परेचर बिलो में चला जाता है 0 डिग्री में. एंड इट स्नो हैवीली, और फिर बहुत बर्फबारी होती है. एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो हियर. पूरे टाइम यहाँ पर कोल्ड ठंडी हवा, चिली बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. नाउ सो मैनी माउंटेन्स आर फ्लोटिंग इन द सी में बहुत सारे माउंटेन्स फ्लोट होते हैं. These are often not visible due to the thick forest. और ये जो माउंटेन्स फ्लोट होते हैं सी में, these are often not visible to thick forest, thick fog. कोहरे में बिल्कुल, फॉग में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते. इट इज़ नॉट विजिबल टू अस. आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर शिप. सी में बहुत शिप्स आती हैं, दैट इज वाई आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर शिप. शिप्स के लिए बहुत डेंजरस है. दैट सेल थ्रू दिस रीजन, अगर उस रीजन से कोई शिप आ रही है दैट मीन्स आइसबर्ग आर वेरी डेंजरस फॉर शिप. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लाइमेट. क्लाइमेट हैज एन आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट. ग्रीनलैंड हैज एन आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट. ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो आर्टिक टाइप है.
The winters are long and cold. Winters बहुत लंबे and cold होते हैं. The sun does not rise for several weeks. यहाँ पर sun it does not rise for several weeks. The temperature drops below the freezing point and it snow heavily. यहाँ का टेम्परेचर below में चला जाता है, बर्फ जमने लग जाती है and snow heavily और snow falling होने लगता है. Extremely cold and chilly winds blow here. बहुत ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर ग्रीनलैंड पे चलती हैं. So students, here climate is this. Climate of Greenland. Let us talk about that. Greenland has an Arctic type of climate. You know that. The winters are long and cold. Winters are too long and cold. The sun does not rise for several weeks. Sun जो है वो कई हफ्तों तक राइज नहीं होता, आसमान में चमकता नहीं है. द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. टेम्परेचर बिलो हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, बर्फ जमने लग जाती है. एंड इट्स स्नो हैवीली, दैट मीन्स स्नो फॉलिंग थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल बर्फबारी होती रहती है. एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो हियर. बहुत ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती हैं. समर इज शॉर्ट एंड कूल. इन ग्रीनलैंड समर इज शॉर्ट. ग्रीनलैंड पर जो समर सीजन है इट इज शॉर्ट, छोटा होता है. एंड कूल, समर सीजन भी कूल ठंडा ही होता है. द वेदर इज ब्राइट. वेदर ब्राइट होता है. एंड सनी, सनी मीन्स चमकीला, आसमान में सूरज चमकने वाला. स्पेशली इन द कोस्टल एरिया. कहाँ का होता है ऐसा क्लाइमेट? स्पेशली इन द कोस्टल एरिया. इवन दो देयर इज कंटिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स. इस टाइम कंटिन्यूसली सनलाइट होती है. सेवरल वीक्स, बहुत सारे हफ्तों में कंटिन्यूसली सनलाइट होती है. इट इज स्टिल वेरी कोल्ड. कंटिन्यूसली सनलाइट होने के बाद भी यहाँ पर बहुत ठंड होती है. So students, I repeat this para one more time. Greenland has an Arctic type of climate. I think you know that and you understood that. The winters are long and cold. The sun does not rise for several weeks. The temperature drops below the freezing point and snows heavily. That means snow throughout the year. Snow falling throughout the year. In Greenland, extremely cold and chilly winds blow in the Greenland. In Greenland, summer are short and cool. The weather of the Greenland is bright and sunny, especially in the coastal areas. Even though there is continuous sunlight for several weeks, it is still very cold in Greenland. So students, in this video, it is enough to you. Meet you in the next video. Good day.